हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो हम जो नॉर्मल वीडियोस पोस्ट करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग मी कि मैम आपने सीए सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज कर लिया था, इस पे कभी आप कोई वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। सो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए और बहुत सारा पंप अप करने के लिए आई हैव सीए रचित शाह विथ मी। He has, at the age of 22, completed CA, CFA, FRM as well as CPA। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। हाय रचित एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मैंने कोई डिग्री मिस तो नहीं कर दी? Hi Ritik, I think you missed out BCom honors. ओके No हाँ, worries. बीकॉम ऑनर्स भी किया है रचित ने। आई एम श्योर कुछ ऐसा होगा जो शायद आप खुद भी मिस कर देते होगे। मैं अपने से फ्रेंड्स को मिस कर सकता हूँ. I- Right. So Rachit is currently working as global equity research analyst. So rightly he has been also using all of his degrees. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ रचित, how what you are doing currently. so I am working currently at Samiksha Capital. It's a portfolio management service. उसका AUM currently it's around 1,000 crore rupees. It has recently crossed 1,000 crore rupees. And I am working as a global equity research associate as you introduced. और बस हमारा काम सिंपल सा होता है कि हम लोग को स्टॉक्स ढूंढना होता है और सर को पिच करने हैं एंड सर इफ ही फाइंड्स द आइडिया इंटरेस्टिंग ही विल इन्वेस्ट द money that he has, the corpus that he has of around 1,000 crore rupees in the particular stock that we have pitched. And if the stock turns out as we have forecasted, then we will earn a sufficient return and it will be satisfying for both our clients as well as our firm. Right. डिग्री द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड द डिग्री हाउ आई एम यूजिंग माय डिग्री तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि CA is a major part obviously because CA covers 8 subjects and 8 subjects starting from accounts and ending with taxation. तो उसके बीच में जितने भी आते हैं ब्रिज वो हर चीज कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाती है. जैसे मैं अकाउंट्स बोलूँ तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑब्वियसली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ the analysis that we conduct, starting from the income statement and going to the cash flow statement. लीगल मैटर्स तो होते तो फिर अगर हमें कंपनी लॉ का थोड़ा आइडिया होता है हम लोग को तो उसके हिसाब से हम लोग को पता होता है कि नॉर्मली हम लोग को एनुअल रिपोर्ट में अगर हम लोग स्टडी करें तो कौन से पार्ट में डायरेक्टली जाना है जहाँ पर हम लोग को की मैटर्स जो हम लोग को हमारे एनालिसिस में इम्पोर्टेंट होगी वो हमें मिल जाएगी. तो it can help was taxation matters. Obviously, it will help when we are going through a company which is facing some litigation matters in direct or indirect taxation. तो इस तरीके से costing obviously because ultimately revenue is made of only two things: number of quantity and the amount of price that you are Right. selling it. So So basically costing the also base really of covers. CA helped you in pursuing all other degrees, means बाकी सब कुछ काफी simple हो गया था once you were through with CA, right? सो थोड़ा सा टाइमलाइन एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब 22 साल की उम्र में सारा कंप्लीट एक साथ हो कैसे गया, कब कैसे कौन सा एग्जाम अपियर किया था? तो वो स्टार्ट तो मैंने CA से किया था एट द एज ऑफ 18. मेरा इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट था मे 19 में. ओ ऑल्सो टू वो मेंशन रचित का इंटर में रैंक भी था AIR, आई गेस इट वाज 24. 24। इनफैक्ट मैं और रचित मिले थे ओसी की ट्रेनिंग में ही आफ्टर इंटर, सो हमारा रिजल्ट आना पेंडिंग था, आफ्टर ट्रेनिंग रिजल्ट आया था। एंड तब तक पता, मतलब आई न्यू ही इज इंटेलिजेंट एंड ऑल। रैंक आया तब समझ में आया था कि ओके, जेन्युइनली जो बोल रहा है कि मैं साथ में सीएफए और सब करने वाला हूँ। सो सिंस देन ऑल्सो ही वॉज वेरी मच फोकस्ड फ्रॉम दैट टाइम, ही हैड वेरी मच क्लैरिटी इन हिज माइंड कि मुझे यही करना है। सो या तो आफ्टर रिजल्ट्स आई रजिस्टर्ड फॉर CFA level 1 in November 19. I was scheduled to give my exams in June 2020, but उसके बाद तो कोविड, कोविड आ गया राइट। तो it led to deferments and ultimately I was able to give my exams in Feb 2021, after all the after two postponements.
साथ में मैं जब परस्यू कर रहा था CFA, तो आई met a person who was pursuing FRM as a course, and he told me that CFA gives a background to a person of portfolio side and return side. But if you want to get a good understanding of risk side, then you should pursue FRM because it covers all the subjects like operational risk, investment risk, liquidity risk, credit risk. And uh, this is all are also an important part of any investment analysis because you can't take any bet in a heavy manner, which might turn out to be very risky ultimately. So ये सब कंसिडर करते हुए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मेरे को लगा कि CFA लेवल 1, लेवल 2 एंड FRM पार्ट 1 has a lot of interconnections, Overlapping, right? overlapping. So मैंने सोचा कि after CFA level 1 I passed in Feb 2021. I registered for August 2021 CFA level 2. After that I registered for FRM part 1 in November 2021. उसके बाद मैंने एक बार के लिए सब कोर्सेज को थोड़ा हॉल्ट पे रखा और started focusing again on CA final. May 22 Because was my your attempt was CA. due in, Yeah. my attempt was due in May 2022. उसके बाद I cleared my CA final in May 2022 attempt. उसके बाद मैंने CPA परस्यू किया. CPA परस्यू का रीजन मेरा ऐसा था कि मेरे को उसमें यूएस गैप की अंडरस्टैंडिंग जो मेरे को ऑलरेडी CFA के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस करके अपना एक पार्ट होता है सब्जेक्ट का, उसके अंदर यूएस गैप की अंडरस्टैंडिंग थी मेरे को, तो वो मेरी इधर इजी था. और CPA ने I was able to complete CPA in just 2 months. I started in July end and I was able to complete that by October starting. So all 4 papers you completed in 2 months only. Yes, I completed all 4 papers in 2 months span. तो CPA मैंने बीच में परस्यू कर लिया. मैंने उसके बाद FRM पार्ट 2 कंप्लीट किया, CFA लेवल 3 कंप्लीट किया. FRM पार्ट 2 मैंने जनवरी में दिया और CFA लेवल 3 मैंने अप्रैल 2023 में दिया. And this is how I was able to complete all the 4 courses in the at the age of 2020. The way you said CPA मैंने बीच में कर लिया was like कि कुछ था ही नहीं, CPA मैंने बीच में कर लिया. So it is something extraordinary only what you've been doing. So ये मतलब इंस्पिरेशन है, कोई मोटिवेशन कहाँ से आया इतना सारा करने का? Your father is also a chartered accountant. So has he played a major role or some other mentor you have in your life? Yeah, you correctly mentioned. My father is the most important mentor throughout my life, not only restricted to my academic life. So my father is also a Gujarat rank holder, not AIR, but he was a Gujarat rank holder in the Okay. year 1992. So I am used. मेरी बहुत हैबिट है कि मैं बहुत ज़्यादा ही बातें करता हूँ पापा के साथ. तो उनके थ्रू मुझे एक आइडिया आया था कि at the age when we are only studying and not focusing on earning money and looking for any different opportunities in the market. So if at that time if we pursue for different courses, then it's the best time. Because एक बार अपन CA हो जाते हैं उसके बाद एक unimplied Laziness आ जाती है clear होने के बाद. Exactly. पढ़ाई नहीं हो पाती उसके बाद. तो फिर आपसे मैंने सोचा था कि ये 4 कोर्सेज मेरे को जितना जल्दी हो और जितना मेरे को कम टाइम में कर पाऊँ मैं वो कर लिया मैंने. सो दिस वाज द रीजन दैट ही इज माय बिगेस्ट मेंटर. उसके सिवाय मैंने संजय सराफ सर, I will like to mention it because I have taken a lot of advice from him also all during my academic days. So and I like the way he explains all the things in the finance in so much detail. क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मेरे को सब कुछ डिटेल पढ़ने में मजा आती है. तो संजय सराफ सर का मेरे को ऑलवेज सपोर्ट रहता था फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड. Okay. Other than that, my relatives who are also CA, they also played a major role in making clear the path that I chose. Right. And also to mention कि ऐसा नहीं है कि Rachit has been only studying and studying. He is also a state level table tennis player and ICI के भी काफी events में I think you've participated.
तो ये इतना सारा बैलेंस कैसे हो जाता है, मतलब पढ़ाई से टाइम निकाल के खेलना। एंड आई नो हिम सिंस लॉन्ग, सो कभी भी इवन इफ आई टेक्स्ट और कॉल हिम ऑन वीकेंड्स, ही वुड नेवर बी एट होम, मतलब कभी ना कहीं घूम रहा है। सो ही हैज टेकन ऑल ऑफ लाइफ, मतलब सब कुछ किया है। तो ये बैलेंस कैसे हो जाता है, मतलब पढ़ाई के साथ भी आप घूम भी रहे हो, आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो एंड सब कुछ। Ultimately it boils down to the time which you are allocating and priorities you decide. तो जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, और जब मैं खेल रहा होता हूँ या मैं बाहर घूम रहा होता हूँ तो मैं बाहर घूम रहा होता हूँ। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं जब सीए कर रहा था मैं घूम स्पोर्ट्स खेल रहा था। मैंने if I am correct then I have not participated in any events of ICA events or maybe any other events, external events in my CA days. Okay, तो it उस was all टाइम पे मेरा after that you did. आफ्टर मोस्टली आफ्टर दैट Okay. उसके बाद शायद इंटरमीडिएट में जब थोड़ा ब्रेक मिला हो या कोविड में थोड़ा ब्रेक मिला हो तब मैंने शायद पार्टिसिपेट किया होगा। बिकॉज मिक्सिंग बोथ ऑफ देम will not be will not help me to achieve anything in extraordinary manner. तो मेरा क्लैरिटी पहले से था कि मैं दोनों को अलग रखूंगा, बट हाँ रखूंगा दोनों को, मैं खाली एक को चूज करके नहीं करना कि अल्टीमेटली कोई will not give an ultimate satisfaction if I choose only one thing. Right. So when you are studying, you are only studying. When you are playing, you are only playing. So the key is, ये students का issue होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हमको कुछ और याद आता है, हम जब कुछ और कर रहे तो लगता है कि नहीं यार पढ़ना बाकी है. So it's okay when you are enjoying, enjoy to your fullest. When you are studying, study to your fullest. In fact, I remember this. See, we all have a common friends group and Rachit is a part of it, obviously. तो जब रचित की एग्जाम्स थी तो फ्रेंड्स में से भी कई लोग बोल देते थे कि यार ये कभी नहीं आता है, मतलब इसको पढ़ना है तो ये पढ़ेगा. He would be termed as selfish some days. I also remember that. But I remember talking to him and he told me, see Riddhi, I'm not selfish. I am self-centered. I know I have to clear. तो ये इतना फोकस कहाँ से आता है, मतलब. एंड इस परस्यूट में ऐसा हुआ है कि कुछ फ्रेंड्स छूट गए बिकॉज पीपल थिंक कि नहीं यार तुम बहुत पढ़ाई 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 में ही हो, या ये वो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना स्टूडेंट्स में, उसके साथ कैसे डील करना चाहिए. हाँ ये बहुत कॉमन चीज है जो होता है लाइफ में, बट टच वुड मेरे लाइफ में जो फ्रेंड्स रहे थे, हाँ यस दे वर फ्रस्ट्रेटेड इन द प्रोसेस, बट दे स्टिल स्टिक अपॉन मी and ultimately they were convinced after seeing my success and all the things that I achieved after a point. So they were there after I completed, but हाँ in the process there were hurdles. तो मुझे बहुत बार ऐसा हुआ था कि मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड की भी अगर बर्थडे पार्टी हो रात को 12 मिडनाइट अपन जाते हैं जिसमें, तो उसमें मेरे को ना बोलना पड़ता था. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट अल्टीमेटली उनको पता था कि मेरा ये पहले से था. Initially when I said no they were always they were frustrated at me, but at the last they were convinced that हाँ कि इसका ऐसा है and there is nothing to be sad about. मतलब जिसको स्टिक करना है वो स्टिक करेगा ही, दैट इज वन. मतलब जो आपकी ट्रू फ्रेंड्स है वो एक बार के लिए क्योंकि आपसे अटैच्ड है तो दे वुड बी फीलिंग बैड, बट लेटर व्हेन यू अचीव द पर्पस तो दे वुड बी फर्स्ट वन टू कम एंड रूट फॉर यू, राइट. सो ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स इवन दो कभी कोई नाराज हुआ बट एवरीवन हैज स्टेड, तो and everyone is happy now today that you have achieved this and you've done this, right. एंड कुछ जनरल और टिप्स स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, मतलब ये कुछ मिक्स नहीं हो जाता, मतलब ऐसे बिकॉज इतना सारा करना ऑब्वियसली यू वुड बी सिटिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस. सो हाउ डिड यू मैनेज दिस, मतलब लाइब्रेरी में पढ़ना, घर पे पढ़ना, नोट्स बनाना या फैकल्टी के नोट्स यूज करना, some general approach or tips that you think would be really helpful for everyone. So one thing, if you are thinking of pursuing multiple courses, find some synergy in it. जैसे मैंने CFA level 1, level 2 और FRM part 1 में synergy ढूंढी थी कि almost 50% course of FRM part 1 was overlapping with CFA level 2. Yes, right. So you can find some synergy and be smart at your when you're studying, so it will help you ultimately. उसके बाद आप CA का भी हेल्प ले सकते हो. CA में जो SFM आता है उसका CFA level 1 तक तो एप्लीकेशन होता है, उसके बाद level 2 में there is more of valuation, so it's a bit higher than SFM, so you can take the advantage of that also. उसके बाद जब क्लियर
क्लियर कर लो, उसके बाद तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू क्लियर, बट यू हैव टू क्लियर इट इन as short time possible, because if you will not clear, then CA laziness will kick in and you will leave the degree half pursued. फिर और जनरल टिप्स में बोलूँ तो फोकस रहना, हो सकता है आपको सुनोगे, बट हाँ जो जर्नी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज there is a funny fact that I have changed 9 libraries in my CA. 9 libraries, is it? Yeah, 9 libraries. And the Because of reason being? different reasons were very different. They were not same in all the cases. One or two reasons I know, I won't be disclosing, but the other reasons I don't know. Like 9 libraries. So you were not satisfied with the environment. You wanted the peace and the way you want to study, right? So the environment also plays a major role. Environment plus the strict rules that the library sometimes have. Like मेरी library में ऐसा rule था कि if after midnight, if you are not out of library, means you are not gone home, then it will only open after 2 a.m. Okay. So between 12 a.m. and 2 a.m. you have to stick. You are not allowed to go to your home. Oh. तो कोई library में ऐसा rules हो, कोई library में मेरे शायद बहुत friends बन गए जो मेरे शायद ultimately मेरे को focus distraction होने लगा and distractions is the correct word to use. तो these are reasons. तो इसके अंदर लाइन लाइब्रेरी चेंज करनी पड़ी मेरे को अल्टीमेटली. तो वो उसके वजह से हाँ मेरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, और वो भी मेरे लिए किसी के लिए ऐसा हो सकता है इसलिए रूटीन ब्रेक हो रहा है, बट इट वाज फॉर मी कि मेरे लिए फ्रेशनेस वाली फीलिंग आती थी आफ्टर 2-3 days व्हेन आई वाज कंफर्टेबल एट द प्लेस. तो बिकॉज this is what I'm talking about, the journey that we live in the 4 years. Because अभी अपन जो स्टूडेंट्स अभी करंटली परस्यू कर रहे हैं, they will not realize the importance, but अभी I and Riddhi, you have both cleared the exams. तो अभी अपन लोग जब भी याद करते हैं तो we remember the same old days that we are lived upon. It's like talking about some old people, but no, it's the fact that you do always remember the journey. That's true, obviously. And you would have missed on a lot of family functions, birthday parties, as you mentioned. So tab it is all कि हम मिस कर रहे हैं, but now we can talk about it in a proud manner कि चलो यार कोई बात नहीं, तब मिस किया, but ultimately वो मिस करके we have achieved this at the end of the day, right? Quickly, can you just explain a very much basic difference between all of these courses, like how the Indian, like CA being Indian course is different, how the testing pattern is different comparatively foreign courses, say CFA, FRM या CPSA? So CA is very much of writing exam. You have to remember a lot of things. But at the same time, CPA and CFA, FRM are more focused on objective examination, are more of objective examinations. CFA में level 1, level 2 is complete MCQ, and level 3 % MCQ and 50% writing. FRM part 1, part 2 is both objective, MCQs. Only MCQs. CPA, all the 4 papers are roughly around 60% MCQ and 40% writing. But in all the 3 foreign courses, you are not required to remember anything. If you are conceptually clear, then you can easily write upon the answers, even if they are in writing. So it's more of application based is what we can say. Yeah, more of application and conceptual clarity. But in CA, we have to remember the exact line and exact word that we have to use in the, because it is kind of, we have to understand that because it is a legal matter. If you change the line, then ultimately there are cases which are fought because of the interpretations. Very rightly said. Exactly, that's a rationale behind it कि क्यों हमको याद करवाते हैं, obviously. So preparation wise इससे ये फर्क पड़ जाता है कि you save time on learning things. You just have to understand the things. इसीलिए preparation time भी हमको comparatively कम लगता है दूसरे courses में, even though the syllabus is vast, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं करना होता है. Exactly. And I remember when you were pursuing all of these courses, a lot of people used to tell you कि भाई इतनी डिग्री लेके करेगा क्या? Ultimately तेरे को सब काम तो नहीं आने वाला है. So what do you think? काम आ रहा है? Is it just you've achieved it and you've kept it on side, or you are actually using those? Because that is very much important. Yes. So at the current time, I'm not able to use all the 4 degrees at the same time because अभी मैं CPA तो use नहीं कर पा रहा. FRM is
helpful when I'm understanding the BFSI sector, banking, financial and insurance sector. तो उसके अंदर बहुत सारे बेसल लॉ, there are lots of basal laws which are cleared in which I have understood in the FRM courses. So yeah, it's helping me, but not in a major role in the current point of time. But there is a famous dialogue of Steve Jobs that you can only join the dots backwards. Right. So I am hopeful that in my career there might be some instances where that it might be helpful. So I had wrestled when I was pursuing the courses, but applying all at the same time is also not possible. And if it's possible, it's possible in a Longer stepwise manner. course of duration, Yeah. not now because you've just started Not working. instantly. Yeah, I just started working and currently understanding the markets and how the corporate world works. So you have to be patient in the journey. When we are pursuing CA, then we have to be patient because of the courses that the syllabus that we have. So patience is the long-term matter. It's not only restricted to academics. So I'm being patient, and I know that it will eventually be positive only, and there will be no negative effects of pursuing any course. That's what is giving me clarity. And one last thing, like how has life changed for you? Before and after, like just 2 years back when you were studying, and now when you've completed all of it, you are working at this young age, how people look upon you in a different manner. How has things changed, or you think that no, it is kind of same only? What has life offered you after this? So one thing that life has offered me is unspoken introduction at any place that I go. And girl attention too, if I'm not wrong. I can't comment upon that. चल अभी मेरे को पता है. It's a motivation for a lot of them out there. So you have to admit, how has life changed for you in all aspects? Yeah, in all aspects it has changed. Now I have a free time. Because the courses have given me the freedom to do whatever I want, being restricted by the office timings and all that things. But ultimately, there is much more freedom as compared to academic days. तो ये सब तो है ही. उसके बाद I am able to reconnect with my friends. इसके बाद मैंने सब बहुत 4 साल तक लिटरली वनवास बोलते थे उस पीरियड को मेरा. तो वनवास खत्म करने के बाद मेरा. So yeah, the life has changed after all the courses. So I'm currently enjoying the life that I have. The unsaid introduction thing is actually true, because पहले आप कहीं जाते हो तो you are being introduced के पढ़ रहा है, CA बन रहा है, but now people already know that okay, now they'll only introduce you कि अरे you know he has done all of these things. So this is a very much normal thing to happen with everyone, which should actually motivate all of you students watching the video कि लाइफ इज गोइंग टू चेंज. जो बोलते कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, जस्ट कंप्लीटेड डिग्री, ऐसा नहीं है. वंस यू गेट इट, you start getting that respect, that recognition, and people start looking at you with a different sort of mindset, and that gives you a really good confidence. So yeah, this was all about it. I just wanted students to know कि there's no deadlock to things, right? आप बहुत कुछ कर सकते हो, and you are capable of actually doing a lot of things. किसी को ऐसा लगता है कि यार CA के साथ CFA कैसे कर लिया, very big deal. See, we have a person here sitting with 5 degrees, talking very much normally, been through all the normal things. He has also been through days which are down. He has also been through days which are good to him. तो ये सबके साथ होता है. And thank you so much, Rachit, once again. Something I will mention one thing over here. कि जब हम पढ़ रहे थे तब भी we were both together in the CFA journey. I had pursued other courses, but yeah, CFA, the timelines were same. मेरा सिर्फ level 3 रचित से पहले हुआ था, level 1 and level 2 हमने साथ में ही दिया था. In fact, OC में हम लोग मिले थे, and then रचित had mentioned कि वो CFA करने वाला है. I had it in the back of my mind, but I was not knowing anyone जो CFA करने वाला है. So yeah, I got to know him, and then कभी कुछ doubt वगैरह भी होता था, तो we used to call. So हाँ, वो है. तो मेरे को याद है अपन CFA लेवल 2 का टाइमलाइन सेम था अपना, अगस्त 2021. तो we had called each other in the starting of July. तो उस टाइम पे मेरा लेवल 2 का कोर्स खत्म हो चुका था, and we were about to start. मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ था, right? I was worried that how will you be able to go through the courses in a span of 2 months, because articleship was also going at the same time. But still, you downplayed the game
जब हम एग्जाम देके आए उसके बाद भी जब हमने बात की थी जनरल टॉक्स के साथ गया एग्जाम, कोई पोर्शन टफ लगा था ऐसा वैसा, वी वर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, बट वी बोथ सॉ द रिजल्ट्स, वी बोथ गॉट ऑलमोस्ट सेम मार्क्स। तो जिसमें मैंने आई हैव पुट मे बी 2x or 3x efforts as compared to you. Hey, ऐसा नहीं, I didn't put efforts, okay? I had less time. So grasping, your graspiness is more better than me, as I can tell at the end. Look who's Conclusion talking. is the graspiness. Yeah, so I remember this. I had actually called him to ask that Rachit, मैं कल से start कर रही हूँ, and I know you have done a lot of already, तो तू मेरे को एक बार guide कर सकता है. And he literally scolded me on call कि तू कर क्या रही है भाई, मेरा more than 80% course खत्म हो गया, and now you are about to start, how you are going to do it? So मेरे लिए it was like very much kickstart कि यार इसका इतना सारा हो गया है, I have to do it. So yeah, alongside your journey when you are studying, डू ऑलवेज ट्राई टू हैव सम फ्रेंड्स जो आपको डांट भी रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं. उनको देयर इज नो कंपटीशन, बट उनको देख के यू ऑल्सो फील लाइक पुशिंग योर सेल्फ. सो या, rightly said about it also. Dan, any last thing you would like to share with all of students? I'll be putting his LinkedIn ID in the description box if anyone wants to connect with him. And आपका कोई और भी query है regarding the courses, you can drop them in the comment section of the video. I and Rachit would be more than happy to address them. And anything that you'd like to say? I will lastly say that all the best to all the students that are going to watch this video, and just enjoy the journey and achieve all the dreams that you are dreamed about. All the best. So great, and thank you so much. एक मैसेज किया था मैंने, ना तो मेरे को बोल ही नहीं सकता था, बट फिर भी यू अग्रीड ऑन इट, एंड इट वाज ग्रेट. आई होप स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा बेनिफिशियल रहेगा ये. एंड डन एवरीवन. सो मिलते रहेंगे अपन ऐसे ही वीडियोस के लिए. टू सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी कंफ्यूज्ड है कि क्या दूसरे कोर्सेज करने नहीं करने, क्या करना चाहिए. लाइक करना वीडियो को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय. Bye bye.